बट अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने इंडियन आर्टिस्ट को देखा, इंडियन इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखा, अब हम देखेंगे एक्चुअल इंटरनेशनल आर्टिस्ट को. ही इज फ्रॉम इटली, हिज नेम इज ल्यूका प्यातिएली. ओके, एंड उनका फर्स्ट एक इटालियन सैलून ओपन हुआ है पूरे इंडिया में. ही इज गोइंग टू क्रिएट अ फ्रेंचाइज ओवर हेयर. और जब भी जब भी इटली का नाम आता है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है दैट इज फैशन एंड एलिगेंस. So with that note, guys, please welcome very talented, very charming Luca Peteli from Italy. He has 4 years of experience. A huge round of applause for the international hair artist. Woo! Ciao India, sono per la prima volta qui davanti a un pubblico indiano e sono molto emozionato. Hello, Mr. Luca Piatelli does not speak English, so I translate for him. He is very happy to be here the first time on this platform to demonstrate today haircut. Visto che siete tutti proprietari di saloni o lavorate in salone, voglio farvi una proposta che in Italia alla donna italiana piace molto. Being that you must be saloon representatives or you have your own saloon, today he would like to propose something for you that you can propose to your people, to your women in your saloon. Something very actual that is popular right now in Italy. Senz'altro le vostre clienti avranno i capelli lunghi e amano i capelli lunghi, quindi non andrò a accorciare molto, ma andrò a creare delle leggerezze con uno stile tutto italiano. Okay, for sure he says Indian women all have long hair, so he will be working on an Indian woman with long hair, but for sure it will be a light cut. Questo stile vi farò vedere come si asciuga velocemente, prende forma e prende la sua modellatura già da bagnato, quindi sarà estremamente facile per la cliente finale asciugarsi i capelli e farsi la piega. Okay, this particular cut, he is doing it especially so that the Indian women, even if after they want to wash their hair at home, it would all go back on its place. It will be very, very easy for them to dry at home. Quindi, insomma, mi scuso perché non parlo inglese, ma vi ringrazio per la vostra attenzione. Okay, he thanks you for your attention, and again, he excuses himself that he does not speak English or Indian. I hope you have a nice time. So, Mr. Luca, all the way from Italy यहाँ इंडिया में आए हैं और आप सबके लिए एक हेयर कट पेश करने वाले हैं. और मिस्टर लूका बोलते हैं कि यूजुअली जो हेयर कट होता है, जब हम सैलून में हेयर कट कराते हैं तो वापस जब हम घर जाके हेयर वॉश करते हैं तो वो हेयर कट खराब हो जाता है. लेकिन आज जो मिस्टर लूका हेयर कट यहाँ पे आप लोगों को सिखाने वाले हैं, वो जैसा आप सैलून में देखते हैं वैसा ही हेड वॉश के बाद घर पे भी नजर आएगा. तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए मिस्टर लूका का. I will tell them that now we will explain all the passages. Gli dico che adesso spiegheremo tutti i passaggi. Okay, just want to inform you, now we will be starting, and Mr. Luca will explain to me in Italian all the passages to arrive at a final haircut. I will explain it to you in English, and of course, she will explain to you in Indian. मिस्टर लूका इटालियन में हेयर कट को एक्सप्लेन करेंगे और हमारे साथ मिस मारिया हैं जो इंग्लिश में आप लोगों को ट्रांसलेट करेंगी और मैं खुशी आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी. Allora, è molto importante fare un'analisi ben dettagliata della cliente, quindi osservarla col suo stile, con le sue forme, con la sua fisicità. Okay, he says the first thing is when a client sits down, you have to make a test and you have to evaluate the client. Each client is a client. It is individual. सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए. हमें क्लाइंट का टेस्ट लेना पड़ता है कि उसको क्या पसंद है और हर क्लाइंट की अपनी एक अलग प्रेफरेंस होती है. Faccio per primo passaggio un triangolo
Okay. Okay. You don't hear? Oh, okay. Okay. Sorry. He says that they need to show 5 minutes before coming on stage. So it is just like happens in USA when people watch it. So see how simple it is and how you can adapt this with your practice. मिस्टर लूका ने बताया अभी कि जो अभी हमारी मॉडल है उन्हें सिर्फ 5 मिनट्स पहले ही मिस्टर लूका ने देखा, तो आप जान सकते हैं कि कितना सिंपल है हेयर कट करना, बिकॉज यूजुअली क्लाइंट्स के साथ यही होता है कि मतलब बहुत सडनली आपके पास क्लाइंट आ जाता है एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ कि क्या कट उन पे सूट करेगा. तो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. Io sono 40 anni che faccio questo lavoro e di show, di fiere, ne ho fatte tantissime nella mia vita. E quando si guarda uno show è importante sì prendere l'ispirazione anche di una cosa molto particolare e molto eccentrica, però poi quello che ci serve è di portare in salone qualcosa che ci è utile. Okay. Mr. Luca is 40 years that does this job and has done many shows. So it's important not just to take a look, but to understand and bring back what you have seen in your salon. मिस्टर लूका इस इंडस्ट्री में मोर देन 40 इयर्स से हैं और काफ़ी ज़्यादा शोज भी वो कर चुके हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ एक लुक प्रेजेंट ना करें, बल्कि जो उनका एक्चुअल सैलून है लूका पियातेली के नाम से, उनको रिप्रेजेंट हम आज यहाँ कर रहे हैं. Gran parte del taglio ora è già fatto, quindi incomincerò a fare le rifiniture. Vedete, sono volate ciocche importanti, ma la lunghezza è rimasta. Okay, most of the cut has already taken place. He is just doing the final touch, but as you can see, the length of the hair has remained. कट जो है पूरी तरह से ऑलमोस्ट हो चुका है, बस अब एक फाइनल टच बाकी है जो मिस्टर लूका भी कर रहे हैं. Ora continuerò la leggerezza facendo con le forbici da taglio una scivolata sui capelli. Okay, at this point, he is only attempting to make the hair a little bit lighter and taking part of where he thinks it's more and has to be taken out. अभी जो मिस्टर लूका कर रहे हैं वो जो हेयर्स हैं हमारे उनको काफी लाइटली कट करेंगे, जैसा कि Please pay attention, as you can see, with the final scissors. आप देख सकते हैं कि फाइनल सीजर से कैसे वो कट कर रहे हैं. बहुत लाइट है इसको फाइनल टच के लिए, तो ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान से देखिए. Okay, we are taking out the hair in excess. जो एक्सेस हेयर्स, जो ज्यादा हेयर्स बच चुके हैं नीड से ज्यादा, उन्हें हम अब कट कर रहे हैं. In Italia si chiama taglio emozionale perché si fa a seconda delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni, di come si ha davanti la cliente, di come si vede la massa dei capelli. Okay, in Italy, the name of the
Ok, ora procediamo all'asciugatura. Okay, now we proceed with the blow drying. अब हम ब्लो ड्रायर करना स्टार्ट करेंगे. Vedete che già con un colpo di phon la leggerezza viene subito fuori e se poi ci si dà un po' di spazzola il gioco è fatto. Okay, as you can see, even just blow drying with your hands, it's already in, everything is in its place. But if you also give it a blow dry, it will be even perfect. As you can see. यूजुअली ब्लो ड्राई जब करते हैं तो ब्रश के यूज से हम करते हैं जिससे बाल सेट रहते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हेयर कट इस तरह का हुआ है कि हम नॉर्मल फिंगर से ही सिर्फ ड्राई करेंगे तब भी हेयर कट अपनी फॉर्म में आ जाएगा. E questa ragazza di capelli ne ha veramente tanti, un capello grosso e molto dritto, però scivolando sulla sciocca noi si riesce a dare quella leggerezza che ci permette di plasmare poi il capello con l'asciugatura. Okay, this model has really a lot of hair and long hair, but with this cut, we are able, when blow drying, to feel how light the hair is. ये जो हमारी मॉडल थी इनकी रियली लॉन्ग हेयर्स थे, लेकिन इस कट के थ्रू हम इनके हेयर्स को एक अलग ही फील देने वाले हैं.
è molto importante anche creare le forme in base alla struttura del corpo. Voi dovete osservare molto la vostra cliente e cercare di creare una forma che sia compatibile col suo corpo. Okay, Luca says it's very important when you have a client in front of you to create something that is uniform with her body. This is very important. That's how you can create a cut. मिस्टर लूका का कहना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी क्लाइंट आपके सामने हो तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि जो भी कट आप उसको देने वाले हैं वो उनकी बॉडी से मैच करना चाहिए ताकि प्रॉपर जो उनको ओवरऑल लुक है वो और ज्यादा परफेक्ट लगे. Il grande Leonardo da Vinci, un italiano che è vissuto circa la metà del 1500, aveva già capito che la testa e il corpo devono avere delle proporzioni ben precise. And he says back in 1500, the big Leonardo da Vinci, I am sure you know who he was, already at that time knew that head and body had to be a proportion together. Leonardo da Vinci, the painter. एक पेंटर थे लियोनार्डो नाम से जो बहुत बाखूबी जानते थे. दिस इज बैक इन 1050 हम बात कर रहे हैं सन की, और वो ये जानते थे कि बॉडी से हेयर कट कितना जरूरी होता है मैच होना, और उसी पर मिस्टर लूका आज काम करते हैं. In Italia la donna gli piace essere molto naturale, capelli al vento, capelli liberi, che interpretano ogni momento il suo modo di essere. In Italy, Italian women like to be very natural, and in effect, they want their hair to be going as the wind goes, naturally, and they feel free. इटली की जो वुमेन होती हैं उनको अपने हेयर बहुत ही नेचुरल लुक में पसंद होते हैं कि जैसे ही हवा चलती है बस उसी नेचुरल लुक में उनके बाल भी लहराए. Lucas says, we want to bring the change in India for you women, but to keep your tradition and your beauty, because you are very beautiful women. मिस्टर लूका का कहना है कि वो इंडिया में चेंज लाना चाहती हैं, लेकिन आपका जो कल्चर है, जो इंडिया का कल्चर है, उसको इंटैक्ट रखते हुए.
I would like to ask you if anybody has any questions. आप में से किसी के बीच कोई सवाल पूछना चाहता है मिस्टर लूका से रिगार्डिंग हेयर कट और एनीथिंग? थिनिंग हेयर करे हैं, इससे बाल हल्के नहीं लगेंगे और ये थिनिंग सीजर से कर सकते हैं, Vedete la leggerezza che si è andata a creare? Vedete questo angolo che scivola giù a 45 gradi? È una cosa molto importante questo tipo di taglio perché è un'innovazione. L'angolazione non più orizzontale ma obliqua è quella che dà più corposità alla parte dietro, quindi dà leggerezza in questa zona, però lascia corposa la parte della lunghezza, quindi non è che si va a svuotare. Avete visto delle forbiciate importanti, ho visto che qualcuno magari mi guardava con perplessità, no? Perché davo queste forbiciate, però vedete la lunghezza non si è persa la corposità, ma si è acquistato leggerezza, quindi basterebbe che si mettesse la testa in giù col fono da dietro verso davanti e sarebbe già a posto. Okay, as you can see, she has not lost the length of her hair in the back, but he has started just to have an oblique cut, and it goes all the way down, not like before this way, but 45 degrees, as you can see. And as you can see, giralo un attimo dietro. As you can see, she has not lost her length, which for you is very important to have long hair. So you can see it only became a little bit lighter here, cutting the way he did oblique and on the side. मिस्टर लूका कहना चाहते हैं कि जैसे कि इंडिया में ज्यादातर विमेन को है लॉन्ग हेयर पसंद होते हैं, तो इस हेयर कट में लेंथ जो है बालों की उतनी ही है जितनी पहले थी, बस फ्रंट से जितने हेयर्स हैं वो थोड़ा अलाइन हो गए हैं 45 डिग्री की एंगल पर, और लेंथ उतनी ही रही है, बस जो ऊपर का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हुआ है. एंड ऑडियंस हैज अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर लूका. Okay, hanno una domanda. Tell me. So audience wants to ask that the way he has cut her hair, will it not make her hair look more thin, and can we do this hair thinning through normal scissors only? Normal scissors. Ok, hanno chiesto questo taglio farà diventare i capelli ancora più sottili, e con quale forbice si possono fare? Allora, nella filosofia dei grandi maestri di taglio a livello mondiale, che è il primo in assoluto è Vidal Sassoon inglese, lui ha sempre concepito che si taglia capelli solo con le forbici, mai con altri strumenti. Tutto quello che abbiamo è nelle forbici. Okay, he says Vidal Sassoon is the best in the world for the cut, and he has always said that only the hair is cut with the scissors. Only scissors. E la leggerezza che si va a dare con le forbici da taglio è una leggerezza che rimane corposa, non si va né a svuotare né a crespare il capello, perché soprattutto i capelli delle donne indiane tendono a essere mossi, e quindi se si fa un taglio con qualsiasi altro strumento tende il capello a incresparsi. Okay, normally the Indian women have a lot of hair and strong hair, so he says only with scissors. And if you start cutting with the scissors, you tend to make it lighter on the center part. So only with the scissors. हम सिर्फ सिजर्स का ही यूज कर सकते हैं, और क्योंकि इंडियन वुमेन के हेयर्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज्यादा बल्की होते हैं, तो सिर्फ सिजर से ही उनको थिन करना बेटर है. Dovete fare attenzione quando andate a fare la scivolatura sulla ciocca, quello sì, è molto importante che non andiate in troppo in profondità, perché si potrebbe bucare, oppure se state troppo leggeri fate diciamo poca cosa, quindi ci vuole una giusta pressione.
quindi ci sono proprio, facciamo anche dei corsi di formazione proprio per insegnarlo. Okay, regarding when with the scissors, he started coming down on the hair. If you've seen, it's very important. It has to be very hard and not very light. Of course, there are courses to do to become expert in this area. जब हम हेयर कट करना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से नीचे तक जब हम सिजर्स चलाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे हाथ से फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी ना हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो. तो इस चीज़ के लिए हमें परफेक्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. Comunque io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato, è stato un grande onore lavorare davanti a un bellissimo pubblico così. Okay. Okay, he thanks you very much for your attention. It was really a beautiful experience for Luca to be here. And at this moment, I want to inform you that we have a stand here that you can visit us. We have Italian products if you're interested. And of course, we are also here in India with our first flagship store. We opened in April and our aim is to open many, many shops. So if any of you are interested, please stop by at our stand. We are very happy to sit down and talk with you. Again, thank you very much. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से इस क्लास को अटेंड करने के लिए. और मिस्टर लूका आपको बताना चाहते हैं कि उनका फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर जो है इंडिया में ओपन हो चुका है लूका पियातेरी सैलून के नाम से, और वो आगे और भी कंट्रीज में अपना सैलून की ब्रांचेस खोलना चाहेंगे. और दूसरी चीज, हमारा स्टैंड जो है इस एग्जीबिशन में मौजूद है. तो अगर आपको कुछ इटालियन हेयर प्रोडक्ट्स बाय करने हैं या किसी भी और गाइडेंस के लिए आप हमारे स्टैंड पर विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you.